students. After the session of the question answer and then the discussion on the previous articles, now I am taking you moving towards the further study of the articles, the remaining articles of our course. So now I'm going to take you towards the understanding of the article number 128. This article is very much simple regarding the relationship which those relations which are created by the individuals in the course of certain acts. For example, I'm going to read out the contents or language of the article, which is very much important because initially we have to follow the statutory laws. Initially, we have to follow the statutory laws and its interpretation. Sorry, जो है interpretation of the statutes are very much necessary. 125 आर्टिकल्स की जो हेडिंग है वो इस तरह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एज रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में कानून क्या कहता है, वो कानून शहादत जो है उस रिलेशनशिप में क्या उसकी प्रेजम्पशंस हैं। When the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms it. कि अब वेदर वो रिलेशन अभी कायम है, एग्जिस्ट करता है या सीज हो गया है, तो उसका जो बर्डन है जो उसको फर्म करेगा इनिशियली उसके ही शोल्डर पे होगा, वो उसको प्रूव करेगा। The principle of this article is that when the existence of a personal relationship or a state of things is once established by the proof, the law presumes that the relationship or a state of things continues to exist as before till the contrary is shown or till a different presumption is raised from the nature of object in question, a partner from the nature of subject in question। वो nature of questions कौन से हो सकते हैं, पार्टनरशिप है, टेनेंसी है और एजेंसी है। Once shown to exist is presumed to continue till it is proved to have been dissolved। तो वंस अगर वो रिलेशनशिप वंस जो है इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, देयर आफ्टर जो है उसका जो द रिलेशनशिप हैज नो मोर एग्जिस्ट, तो उसका जो बर्डन है तो वो पहला क्वेश्चन है उसके रिलेशनशिप जो है उसका होना कि वेदर पार्टीज दे आर इन टेनेंसी एग्रीमेंट, पार्टीज आर अंडर पार्टनर वर्किंग अंडर पार्टनरशिप, और प्रिंसिपल और एजेंट का जो है वो इनिशियली तो ये प्रूव करना है कि वेदर दिस अगर वो प्रिमा फेसी उसके लिए कोई एविडेंस है तो उस कोर्ट उसको प्रेज्यूम कर लेगी उस रिलेशनशिप को। जिस तरह पार्टनर्स हैं, द पार्टनरशिप वंस शोन टू एग्जिस्ट इज प्रेज्यूम्ड टू कंटिन्यू अंटिल द कंट्री इज प्रूव, जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाए उस फैक्ट को कि ये पार्टनरशिप जो है वो विथड्रॉ हो चुकी है या ब्रेक उसका जो है नो मोर पार्टनर्स जो है वो उन्होंने पार्टनरशिप खत्म कर दी है। तो आफ्टर अ फर्म अच्छा डिसोल्यूशन सॉरी जो अगर पार्टनर फर्म जो है वो अगर बाद में वो डिसॉल्व होती है, आफ्टर अ फर्म इज डिसॉल्व द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टीज और एनी एक्ट देन व्हिच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म if done before the dissolution until public notice of dissolution is given। तो अगर फिर पार्टनर्स जो हैं वो डिसोल्यूशन के नोटिस इशू करने के से पहले अगर कोई एक्ट करेंगे तो वो जो है वो एक्ट जो है वो पार्टनर्स का ही प्रेज्यूम किया जाएगा, लेकिन आफ्टर इशूइंग द नोटिस और वो पब्लिक एट लॉर्ड्स के नॉलेज में आ चुका है उसके बाद वो एक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स एक्ट होगा, पार्टनर्स एक्ट नहीं होगा। इसी तरह प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हेन एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट इज वंस शोन टू एग्जिस्ट, it is presumed to continue until the contrary proved। Section 182 and Section 238 of the Contract Act deals with the relationship of the principal and agent। Section 206
provides that a reasonable notice must be given of revocation or renunciation of the agency. Section 208 provides when the authority of an agent is termination. Termination of agency जो है उसका sufficient notice होना चाहिए कि वो टर्मिनेट हो चुकी है, क्योंकि एजेंट होता है वो जो भी परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करता है, और ये लाइबिलिटी एजेंट और प्रिंसिपल की फिर मुश्तरका लाइबिलिटी हो जाती है. प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाउंस के जो एजेंट्स एक्ट है वो उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है. वंस एजेंसी प्रॉपरली एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के तहत क्रिएटेड है तो उसकी जो बाद उसके टर्मिनेशन जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि उसके टर्मिनेशन को प्रूव करे. और लैंडलॉर्ड और टेनेंट, where the relationship of the landlord and tenant is admitted or proved to exist, it will be presumed to continue until it is shown by the affirmative proof that it has ceased to exist. Mere non-payment of rent, though for many years, is not sufficient to show that such relationship is ceased. Ab tenancy, once tenancy has been established, has been created, तो टर्मिनेशन जो है वो फिर टेनेंसी जो है नो मोर टेनेंसी बिटवीन रिलेशनशिप इज नो मोर जो है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, तो वो इस फैक्ट से प्रूव नहीं होगा कि टेनेंट जो है वो किराया नहीं दे रहा. अगर टेनेंट पोजीशन है उसके पास और वो पोजीशन का जो करेक्टर है, नेचर है, वो एज अ टेनेंट है तो वो टेनेंट ही रहेगा अनटिल अनलेस वो उस जगह को वैकेंट नहीं करता. अब रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट सीज किस तरह होगा? ओनर्स टू प्रूव when a certain persons are principal and agent and they have been acting as such, the burden of proving that such relationship has ceased is on the person who is assert. तो जो उस रिलेशनशिप को डिनाई करेगा, असर्ट करेगा, डिजायर करेगा, that person has to prove that fact before the court of law. फर्दर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ओनरशिप का. अब ओनरशिप जो है इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आर्टिकल 126. हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट burden of proof as to ownership. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. The principle of this article is that this article gives effect to the principle that possession is prima facie evidence of the complete title. Anyone who intends to oust the possessor must establish the right to do so. This is to be presumed from the lawful possession until the want of title of a better title is proved. The principle of article does not apply where the possession has been obtained by fraud and force. The term possession in this article is to be understood as opposed to the judicial possession and to denote actual possession, actual present possession. A person in possession of land without title has an interest in the property which is heritable and good against all the world except the true owner. An interest which, unless and until the true owner interferes, is capable of being disposed of by deed or will or by execution of sale just in the same way as it could be dealt with if the title were unimpeachable. This article will further help the claim of ownership. How to claim of ownership? अब ownership जो है, ownership, title and possession. All these, a person is claiming title, he must possess the ownership and he must have the possession of the certain anything जिसके लिए वो claim करता है. तो ये article suggest करता है कि possession जो है, this is the one of the strong piece of evidence. Person cannot be ousted from the lawful possession until unless जो claim करता है उसके पास भी एक strong जो है वो title हो जिससे prove हो उसका relation with the certain property. इसरा जो next article है, next article is 127 which is also very important. ये जो good faith में बहुत सारी transactions होती है हमारी सोसाइटी में, तो उसके बारे में article क्या कहता है? As per the article 127,
proof of good faith in the transactions where one party is in relation of the act of confidence. The interpretation, the contents of this article is these are the contents when there's a question as to the good faith of a transaction between the parties, one of whom stands to be other in a position of active confidence. The burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence. अब गुड फेथ किस तरह क्रिएट होता है कि वंस गुड फेथ तब माना जाता है जब पार्टीज के दरमियान में कोई ऐसा रिलेशन हो कॉन्फिडेंस का, ब्लाइंड फेथ का एक दूसरे के ऊपर, तो उसके बाद ही पार्टीज कोई ऐसा एक्शन अंजाम देती हैं जो गुड फेथ के जो है पैरामीटर में या उसके एम्बिट में आते हैं. तो उसके जो इलस्ट्रेशन है, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज इन क्वेश्चन in a suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on the advocate. Number 2, the good faith of a sale by a son just come of age to a father is in question in a suit brought by the son. The burden of proving the good faith of the transaction is on the father. The principle of this article is that the principle of the rule embodied in the article, which was called the great rule of the court. In a matter of advantage with a person placing confidence in him is bound to show that a reasonable use has been made of that confidence, a rule applying to trustees, attorneys, or anyone else. Where a fiduciary or quasi-fiduciary relationship exists, the burden of sustaining a transaction between the parties rests with the party who stands in such a relation and is benefited by it. The plaintiff, having been entirely in the hands of the defendant, would be destitute of the means of proving affirmatively the malefices of the transaction. Whilst the defendant in such a transaction may fairly be subjected to the duty not only of dealing honestly but of preserving clear evidence that he has done so. तो students, the active अब उसमें ये है कि these words indicate that the relationship between the parties must be such that one is bound to protect the interest of the other. This has been held to apply to a trustee, an executor, an administrator, a guardian, an agent, a minister of religion, a medical attendant, an actioneer, and an attorney. So a person standing in a confidential relation towards other cannot entitle themselves to hold benefit which those others may have conferred upon them, unless they can show to the satisfaction of the court that the person by whom the benefit have been conferred had competent and independent advice in confirming them. Any act has been done in order to the good faith. अब उसका जो गुड फेथ में कुछ पार्टीज जब हम आप जाएंगे तो क्लेम करते हैं कि वी हैव डन दैट पास्ट एक्ट इन दी गुड फेथ, क्योंकि हमारा जो है सामने वाली पार्टी पे गुड फेथ था. इन दिस जो है resultantly we have done transaction without any documentation, without any proof, because we have certain good faith on that person. जिस तरह spiritual relationships होते हैं जिसमें नॉर्मली इंसान जो है गुड फेथ में कुछ चीजें जो है वो करता है, दैट इज द नेचुरल ट्रूथ, वो है. तो अब पहले तो अब उस क्लेम को जो पार्टी अफर्म करती है तो उसको उस अफर्मेशन को प्रूव करने के लिए वो गुड फेथ जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि रियली वाकई उन इंडिविजुअल्स के दरमियान में कोई गुड फेथ कॉन्फिडेंस का वो लेवल था जो जिससे वो गुड फेथ जो है वो रिलेशंस जो है उसको परस्यूम करे कोर्ट. तो अब यहाँ पे नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज. देयर आफ्टर रिमेनिंग 2 आर्टिकल जो है वो उसको हम डिस्कस करते हैं. अभी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें, तो उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं. So now I'm going to open the forum for discussion.